Welcome everyone to Krishnaverse, an AI-inspired character of Lord Krishna, in which you have any problems in your life, you can discuss with it and get a suggestion based on the readings of Bhagavad Gita and the sayings of Lord Krishna. It reflects various moods such as There are 6 types of moods like calm, conflict, clarity, joy, reflection and confusion. Like जो आपको उस टाइम पे इमोशंस होंगे या टाइम पे उसको आप जो वर्ड्स आप उसमें डालोगे टेस्ट टाइप जो भी लाइक मान लो कि आई एम सैड तो इट लाइक काम करेगा आपको मतलब क्लैरिटी देगा कि आप फील क्या कर रहे हो आपको नए नए थॉट्स देगा. So, as you can see, interface we have shared a link with you. This is all the moods as Vishwas correctly explained: calm, conflict, clarity, joy, reflection, and confusion. When you click on begin your reflection, you can see our home page, in which there will be a prompt bar at the bottom. उसमें तुम्हें जो भी फील हो रहा है, you can type about it. I'll suggest कि तुम अपनी जो म्यूजिक है उसको ऑन करना, because there is a music behind every emotion which you feel. So you are before you test, let me show something. One more thing, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसमें हिंदी में लिख सकते हो. So if I write here like I am happy, Like you can see that. so it comes as a joy because I am happy. So in the joy one, it is telling me कि okay, it is good to be happy, but you have to remain in a very positive environment. नहीं happy नहीं. You can type anything you are facing problem like you are facing problems in study something. I'm not able to study. So as he wrote, he is not able to study. So in the voice of Lord Krishna or in the sayings of Lord Krishna, he will get some inspiration from. जो आप फील कर रहे हो उसको डालो प्रॉम्प्ट. लाइक तुमने लिखा फीलिंग एंशियस तो देखो इसमें रिफ्लेक्शन आया लाइक जो लॉर्ड कृष्णा के जो वर्ड्स थे रिगार्डिंग एंशियस तो उसके थॉट्स आ गए और पीछे साउंड बज रहे हैं म्यूजिक के. तुम चाहो तो इसमें हिंदी में लिख सकते हो चाहो तो हिंदी में भी अगर नहीं आती जिसको लाइक यू कैन लिरिक्स इन दी वॉइस. मेरा पढ़ने का मन नहीं करता गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ. So you can- स्टडी लाइक आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग हाउ आई एम फीलिंग एंग्री. You can write it any language you wish, Hindi, English, or even a mixture of it. Just express yourself. But it's not doing any Bhagavad Gita like it's general. It's rooted from Bhagavad Gita and then modified into our current language. So it's not the exact sayings of Bhagavad Gita, but it's the teachings, the inspiration, the way Lord Krishna used to say it. As many times with not this one, but in the next one you can see it will be using some words like part or dear one. But that would come now as it has saying it has come in the state of conflict. Yes. एक्सक्यूज मी आपने क्या लिखा लाइक एक्स्ट्रा ड्रॉप में वेरी रिलेटेड है. ओके गुड यू कैन प्रोसीड अहेड. लाइक तुमने जो लिखा करियर पाथ के लिए उसमें कॉन्फिडेंट आया मतलब कि लॉर्ड कृष्णा के अकॉर्डिंग जो भगवद गीता ने जो बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है लाइक बहुत सारी डिफिकल्टीज आती लेवल तो उसको कॉन्फिडेंट के अंदर बोलते हैं वो तो जैसे थॉट्स आया है ये देख सकते हो आप. तो क्या लगा आपको? So he is in a state of confusion and now he is trying a prompt. And that's, he has got a state of confusion and an advice which is rooted from Bhagavad Gita.